First part is the governor's post dependent on pleasure of the president? Don't say yes or no in the beginning. मैं शुरू में ही कहता हूँ. First you say, what is this pleasure of the president? What do you understand by this? Right? Then you say yes. I mean, what is the constitutional provision? Will hold office on the pleasure of the president. So first you have explained what is pleasure, then he holds office. That means actually, naturally the answer is yes. What exactly constitutes the discretion of the governor while exercising numerous powers? वैसे ही बताइए, वैसे डिस्क्रिशन होता क्या है? Just the word discretion. What is our understanding of the word discretion? है? नहीं. क्या? वही तो मैं कह रहा हूं. कैसे? देखिए, डिस्क्रिशन क्या होता है? इफ यू हैव मोर देन वन alternatives before you, which one you will choose is your decision. That is discretion. मुझे कनॉट प्लेस जाना है, ठीक? मैं अपनी गाड़ी से जाऊं, मैं मेट्रो से जाऊं, मैं बस से जाऊं, मैं कैसे जाऊं? आई हैव ऑल्टरनेटिव्स, सो आई यूज माय डिस्क्रिशन. मैनेजमेंट पढ़ी हुई है आप लोगों में से किसी ने? MBA वगैरह कुछ किया हो? नहीं. एक होता है व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. टू फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर्स. कस्टमर को तो मैं कहता हूँ कष्ट से मर वाला हाल होता है. बट व्हाट इज नीड एंड वांट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट? लाइक आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है. आई नीड समथिंग टू ड्रिंक टू क्विंच माई थ्रस्ट. नाउ आई हैव वेरियस अल्टरनेटिव्स. पानी भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, लस्सी भी है, दूध भी है. नाउ दैट इज माई वांट. व्हाट आई वांट? आई वांट कोक. नो, आई वांट पेप्सी. But both are working to fulfill my need, isn't it? So that is how the marketing people, they will find out कि इसकी need ये है, but उसकी want क्या है? You need a vehicle, you need a four-wheeler car, but what do you want? You want Thar या Fortuner या कौन सी? उस हिसाब से वो मार्केट रिसर्च करके देखते हैं कि इतने मार्केट सेगमेंट में कितनी क्या जरूरत है. वो जो वांट वाली बात आ जाती है ना, उसमें डिस्क्रिशन आ जाता है, एक डिसीजन मेकिंग होती है. इफ यू हैव मोर देन वन, अगर तो एक ही है आपके पास अल्टरनेटिव, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिस्क्रिशन इन दैट. बट इफ यू हैव मोर देन वन चॉइसेस, अल्टरनेटिव जिनको हम कहते हैं, देन यू कैन एक्सरसाइज योर डिस्क्रिशन. This is where, now link it with this. गवर्नर के पास अल्टरनेटिव्स हैं. रिपोर्ट भेजूं ना भेजूं, क्या लिखना है? वेदर दिस अमाउंट्स टू दिस, दैट इज हिज जजमेंट. इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो देयर ही एक्सरसाइज डिस्क्रिशन. इसको CM बनाऊं या इसको बनाऊं, ये discretion. So whenever there is more than one alternative, question of discretion will come. Now while exercising that discretion, that is making a decision to choose a particular alternative, whether you are acting in an arbitrary manner, unreasonable, illogical, irrelevant grounds, वहां पे आपका डिसीजन, वो ये नहीं कहते कि आपने, आपका डिस्क्रिशन था, आपने लिया, आपने इसको CM बनाया, हमें कोई दिक्कत नहीं. दैट्स व्हाट जजेस विल से.
But if you are ignoring the majority party leader of the majority party, and you are choosing somebody else, वो आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि भाई मैं सिर्फ मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही सीएम बनाऊंगा, बट यू हैव टेक दैट मीन्स यू हैव टेकन एन आर्बिट्रेरी डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर whims एंड फैंसीज, एंड दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, तो यहां पे क्या है, व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर वाइल एक्सरसाइजिंग न्यूमरस पावर्स। अब न्यूमरस पावर्स में आपको डिफरेंट पावर्स देनी पड़ेगी, इसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स भी देनी पड़ेगी, इसमें लेजिस्लेटिव पावर्स भी देनी पड़ेगी, पार्डनिंग पावर भी जुडिशरी। और ये क्वेश्चन बड़ा है मेरे ख्याल 20 मार्क्स का, सो यू कैन राइट अप टू 250 वर्ड्स। So, as I always say, underline the key, mark it number 1, mark it number 2, statutory provisions and relevant case law. So, how you will start your answer? पहले वाला तो ठीक है, मैंने बता दिया, एक पैराग्राफ उसका हो गया। सेकंड में क्या है, डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर अंडर 3 पावर्स, ये लिखोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल्स, केस लॉज, एंड देन यू कंक्लूड। बस, तो कोई पोर्शन छूटेगा नहीं आपका। इस तरह से मार्क करने से आपका कोई छूटेगा नहीं। कई बार हो जाता है जल्दी में लिखने में, we sometimes miss a part of the question, but in this examination this is very important. You should not miss on any part and try to give only the relevant articles, relevant sections, relevant case laws. नाम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, डिसाइडेड केस लॉ करके उसका रेशो लिख दो। कई बार नहीं होता, ब्लैकआउट हो जाता है एकदम, बिल्कुल नाम ही नहीं याद आता, पर आपको पता है केस है। मान लो डीसी वधवा याद ना आया, कोई बात नहीं, इन्हें लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दिस, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, मार्क्स जरूर काटेगा, आधा काट लेगा, पर वो समझ जाएगा आपको पता है। हाँ, आपको नाम नहीं याद है,